হ্যালো ভিয়াস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল শিক্ষা কেন্দ্র উন্নয়ন সোসাইটি শিলিগুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো আজকে আমরা 2023 অক্টোবর নভেম্বর এক্সামের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স পেপার যেটি সেই পেপারটি আজকে আমরা সলভ নিয়ে এসেছি, ফুল সলভ। ঠিক আছে, তো আজকের এই ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন এই কোশ্চেন্স পেপারটি ফুল সলভ। আর এই কোশ্চেন্স পেপারটি যদি আপনাদেরকে লাগে তো আমাদের যে ডিসক্রিপশন বক্স আছে সেখানে আমরা ডাউনলোড লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেবো, সেখান থেকে এই পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নেবেন। আর এর অ্যান্সারটি পিডিএফে দেওয়া হচ্ছে না, তো আপনারা ভিডিও থেকে নিয়ে নেবেন অ্যান্সারগুলো। তো চলুন দেখা যাক 64 OSS 2 কোশ্চেন পেপার সলভ। Hello everyone, welcome back to SHIKSHA KENDRA UNNAYAN Society, Siliguri, West Bengal. So today we will be solving English 302 paper, and section A deals with the number 1. Write a paragraph of about 100 words on any one of the following topics. आप लोगों को नीचे 3 टॉपिक दिया हुआ है, इनमें से आप लोगों को सिर्फ एक करना है and you have to write the paragraph of given topic. नंबर ए, विजिट टू अ होली प्लेस, रिफ्रेश एनर्जी। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है जिस भी जगह पे होली प्लेस मतलब टेम्पल, मंदिर, जहाँ पर भी आप लोगों ने विजिट किया है वहाँ का एक्सपीरियंस या फिर होली प्लेस का रिफ्रेश एनर्जी शेयर करना है। Answer. My family decided to visit the Gangotri during our summer vacation in the month of May. It is a town in the state of Uttarakhand at the bank of river Bhagirathi. We started our journey early morning at 5 a.m. After traveling for 10 hours, we decided to stay for the night at Joshimat, a town in Uttarakhand. Next morning, we again started our journey early and reached the Gangotri town at about 11:30 a.m. This is the place from where the Ganga originated and it is one of the 4 sites in a Char Dham pilgrim. There is a Gangotri temple and a river is called Bhagirathi. Here, King Bhagirath had prayed for several centuries to bring the Ganga river on the earth to make free the soul of his ancestors. यहाँ पे मैंने लिखा है गंगोत्री ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर वेकेशन, जहाँ पे आप गंगोत्री विजिट किए थे समर वेकेशन के टाइम में। आप लोगों को टाइम, डेट, लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या था, वहाँ जाकर आप लोगों को कैसा फील हुआ, वो सभी शेयर करना है। और वहाँ का स्टोरी कि वो टेम्पल क्यों बना है, कैसे बना है। आप कोई भी टेम्पल, कोई भी होली प्लेस ले सकते हैं। बी, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एवरी इंडिविजुअल। एजुकेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आपको 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। यू कैन राइट लाइक आंसर, एजुकेशन इज अ वेपन टू इम्प्रूव one's life. It is probably the most important tool to change one's life. Education for a child begins at home. It is a lifelong process that ends with death. Education certainly determines the quality of an individual's life. Education improves one's knowledge, skills, and develops the personality and attitude. Most noteworthy, education affects the chances of the employment for people. A high educated individual is probably very likely to get a good job. In this essay, An Importance of Education, we will tell you about the value of education in life. It is very necessary to have education for everyone. We can change our world and can learn many more things with the help of education. Education क्या है? एक weapon है आप लोगों के या फिर किसी का भी ज़िंदगी संवारने के लिए। अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है तो आप लोगों के पास नॉलेज होगा, स्किल्स डेवलप होगा, बट एट द सेम टाइम गुड न्यूज़ ये होगा कि अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। तो एजुकेशन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, टू लर्न द मैनर्स, टू गेट द जॉब, to know about an educations and to develop the skills. You can write like this. Number C, rains are important for farmers. बारिश फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आपको 100 वर्ड्स में फिर से पैराग्राफ लिखना है। Answer. Without water, crops cannot grow. Too much water is not good for many crops either. Apart from paddy rice, there are only few crops which is like to grow with their feet in the water. The most well-known source of water for plant grow in a rainwater. Good rain during the rainy season result in bountiful crops which benefit the farmer. A major portion of the country crop area is completely dependent on monsoon rain as they are not equipped with different method of irrigation. Without water, crops cannot grow. पानी
फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लोग अगर लगाए फार्म में लगाया तो फिर हम लोगों को क्या चाहिए, पानी चाहिए उसे ग्रो करने के लिए। सो फार्मर्स सभी जन इरिगेशन तो पहले होता था, अभी भी होता है, बट दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेन्स। जो नेचुरली रेनफॉल होता है उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट होता है फार्मर्स। सो रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। ओके, नंबर 2, रिपोर्ट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन इज इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को नीचे दी हुई है कॉन्वर्सेशन बिटवीन सुशील एंड नीना का पढ़ना है और फिर नीचे दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। सुशील, is the novel interesting? Nina, yes, I like it. Sushil, what is it about? Nina, it is about a stranger who is suspected to be a thief. Sushil, oh, that must be interesting. Sushil saw his friend Nina reading a novel. He asked her dash. Nina replied. उसने क्या reply किया? क्या पूछा उसने? What is novel about? Answer is what is novel about? In positive that she liked it, Sushil became curious and inquired of her what it was about. Nina replied that it is suspected is the answer to be a thief. Sushil expressed that it must be interesting. Now number 3, fill in the blanks in the following sentence with appropriate form of verb given in the bracket. आप लोगों को ब्रैकेट में दिए हुए सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिया है और ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड का अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के आंसर लिखना है। माउंट अबू डैश, बी का क्या होता है, इज द आंसर। द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान विच इज वेरी पॉपुलर इन द रीजन। अकॉर्डिंग टू लेजेंड इट वॉज द होम ऑफ सेंट वशिष्ठा who has created the 4 powerful Rajput tribes. Maharaja of Sarohi gave it on the rent to the British government, who used it as a headquarter for the resident of Rajputana situated at a Naki lake. It is known as a place that increases joy. Now number 4, fill in the blanks in the following sentence with the appropriate passive form of verb given in the bracket. आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे fill in the blanks फिल करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें आंसर फिल करना है विद द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ वॉइस लगा के, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के आंसर लिखना है। ऑन थर्सडे ऑल द डिवोटीज रीच सिद्धि। लाइट वेप का क्या होता है, वेप्ड बाय द डिवोटीज। सॉन्ग ऑफ द डिवोशन, सॉन्ग का क्या होता है, सैंग बाय देम। वेरियस टाइप ऑफ डिशेस एज प्रसाद, ऑफर का क्या होता है, ऑफर्ड इज द आंसर। 5. The following passage has 7 mistakes related to punctuation and inaccuracy of uses. Identify the error and write in the table B. The correct answer must be written in table C. First one is done for you. आप लोगों को ये पैसेज पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, और यहाँ पे पंक्चुएशन में रॉन्ग है, जहाँ पे आप लोगों को रेक्टिफाई करके यहाँ पे 2 टेबल दिया है। ए में तो आपको नंबर्स लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, और बी में क्या गलत है वो लिखना है, और सी में वो गलत के जगह पे क्या लिखना है वो करेक्ट आंसर लिखना है। As you can see, Picasso is considered by many as a greatest painter of the modern age. Now, Picasso is considered by many as ओ की जगह पे क्या होता है, द ग्रेटेस्ट पेंटर होता है। सो ओ की जगह पे देखिए यहाँ बी में अ लिखा है, अ इज रॉन्ग, द करेक्ट इज द। ओके, देयर आर स्टोरीज ऑफ लेजेंड अबाउट हिम। Once on a beach, southern France, the little boy, obviously sent by her parents, approached Picasso with a sheet of paper and begged for a small autograph done. Picasso thought for a moment that he tore up design on the boy's chest, the paper, some color crayons, drew design on the boy's chest or neck, and signed his work and sent the youngest back to her parents. ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और फिर जहाँ पे भी पंक्चुएशन का डिफरेंसेस होता है यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे ये पूरा पैसेज पढ़ के आप लोगों को पंक्चुएशन में डिफरेंस निकालना है, मिस्टेक निकालना है। जैसे कि पिकासो इज कंसिडर्ड बाय मेनी एज अ ग्रेटेस्ट पेंटर है, यहाँ पे अ की जगह पे क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। सो मैंने गलत अ लिख दिया है बी सेक्शन में, और फिर राइट आंसर इज द, वो लिख दिया है मैंने सी में।
This is how you have to write. Now again, there are stories or legends. There are stories of legends होता है, तो और गलत है तो वो मैंने बी में लिख दिया, और राइट फॉर्म इज ऑफ मैंने सी में लिख दिया है. नाउ अगेन, द वंस ऑन अ बीच, अ की जगह पे क्या होना चाहिए, द. अ की जगह में क्या होता है, द बीच. नाउ नंबर 4, साउदर्न फ्रांस, द लिटिल बॉय. द लिटिल बॉय नहीं होता है, अ लिटिल बॉय होता है, तो मैंने द बी में लिख दिया है विच इज़ रॉन्ग, एंड द करेक्ट फॉर्म अ लिख दिया है सी में. ओके, नाउ वी हैव टू सर्च फॉर एन अनदर मिस्टेक. नाउ वी कैन लर्न फ्रॉम यर. हर पेरेंट्स, ऑब्वियसली सेंट बाय हर पेरेंट्स. नाउ ये लिटिल बॉय कौन है, ही इज़ अ बॉय, सो हर की जगह पे क्या लगता है, हिज. सो हर, his. Number 5, as you can see, her is wrong, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, his is right. Picasso thought for a moment, then tore up design on the body, chest, the paper, some colors, crayon, design on the boy chest और neck है. और की जगह पे क्या होना चाहिए, and होना चाहिए, as I have written or and. 6 नंबर पे देखिए, or is wrong, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, and neck. And signed his work and sent the youngest back to her parents. Her के जगह पे क्या होना चाहिए, again his होना चाहिए. So her, his is the right form. You have to search for the mistake. आप लोगों को मिस्टेक देखना है पंक्चुएशन में, ओ और द, ऑफ, ऐसे जगह पे कौन सा कहाँ पे होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली कहाँ पे लगना चाहिए, वो मिस्टेक ढूंढ कर करेक्ट फॉर्म लिखना है. Now number C. Combine the following pairs of sentence using the connectors given against each pair. आप लोगों को ये दो कंबाइन करके एक आंसर लिखना है. A. Bring me the file. The file is on the table. आपको बीच में क्या लगाना है, which लगाना है. Answer will be bring me the file which is on the table. एक ही सेंटेंस हो गया. Now number B. Yesterday I met a man. He worked in a circus. आपको बीच में क्या लगाना है, हु लगाना है, और फिर एक ही सेंटेंस बनाना है, ये दो सेंटेंस को जोड़ के. आंसर, yesterday I met a man who worked in the circus. Number C. I have one black cat. His name is Blackie. Answer, I have one black cat whose name is Blackie. D. He was my teacher. I will never forget. आपको बीच में क्या लगाना है, whom. Answer, he was my teacher whom I will never forget. Now number 7. Answer any 3 of the following question in about 30 to 40 words each. A. Why did the doctor reach for his pistol? What did he do with it? This question has been taken from a chapter, A Case of Suspicious. Answer. The doctor reached for his pistol at Evans. He thought that Evans had stolen his watch. He did so to threaten Evan. डॉक्टर ने पिस्टल क्यों निकाला, पिस्टल इसलिए निकाला क्योंकि उसे लगा कि इवान ने उसका वॉच चुरा लिया है, इसलिए इवान को धमकी देने के लिए उसने पिस्टल निकाला था. नंबर बी. विच शोविनियर डिड गावस्कर लाइक द मोस्ट एंड वाई? दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई स्टेप. Answer. The souvenir that Gavaskar liked the most was the stump bearing the autograph of the 1952 Indian and England team. He loved to linger over the autograph of every player. उसको क्यों वो अच्छा लगता था, क्योंकि उसे ऑटोग्राफ लेना बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है वाई, क्यों ना. सो द आंसर इज ही लव टू टेक द ओवर द ऑटोग्राफ ऑफ एवरी प्लेयर. Now number C. What kind of education does the writer think is most useful? This has been taken from a Father, Dear Father chapter. According to the writer, wisdom comes as a result of studying hard, and living a full life is most useful education. कैसे टाइप का एजुकेशन राइटर को बहुत यूजफुल लगता है? अकॉर्डिंग टू राइटर, विजडम कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडिंग. विजडम कहाँ से आता है? पढ़ने से. स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट अ विजडम, सो वही उसको यूजफुल लगता है राइटर को. नंबर डी. वाई डिड बाल्दियो हैव टू टेक अप द जॉब ऑफ खलासी? द टाइगर इज इन अ टनल चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है. आंसर. द फैमिलीज स्मॉल राइस फील्ड डिड नॉट प्रोवाइड देम विथ मोर देन अ बेयर लिविंग, सो बलिडो हैड टू टेक अप द जॉब ऑफ खलासी एज द स्मॉल स्टेशन इन द जंगल. उसके फैमिली को जो
बल्दियो का फैमिली है उसे सिर्फ राइस फील्ड से वो अच्छे से जीने के लिए फॉर हिज लिविंग वो कुछ खास पैसा नहीं कमाता था, ठीक है. सो दैट इज़ वाई ही टुक अप द जॉब ऑफ खलासी एट द स्मॉल स्टेशन इन द जंगल. Number 8. Answer the following question in about 60 words. Who was Ivan? Where was he going? This question has been taken from a case of suspicious. Ivan was a prisoner. Prison staff called him Ivan the Break because he had successfully escaped from prison 3 times before. He was a good-natured, peaceful and funny person. However, he was a kleptomaniac and had a habit of stealing things. इवान कौन था? इवान एक प्रिजनर था, जो जेल में रहता है उसे प्रिजनर कहता है, तो वो प्रिजनर था. वेयर वॉज ही गोइंग? वो कहाँ पे जा रहा था? वो इतनी दिन मतलब कि 3 बार वो प्रिजन से जेल से भाग गया था, इसलिए मुझे कहता था इवान्स द ब्रेक. वो कैसा था उसका बिहेवियर? ही वॉज लाइक गुड नेचर, एकदम पीसफुल फनी पर्सन था. ओके आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर ये क्वेश्चन करना है, बीच में आप लोगों को दिखाई दिया होगा, और सो यू हैव टू डू एनी वन ऑफ दैट. हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग भोली फ्रॉम stammering dumb cow into bold and confident girl? This question has been taken from chapter Bholi. Answer. Her school teacher changed her future and made it better. She transformed a timid dumb cow into a bold, courageous, confident and self-respecting person. Now number 9. Read the following extract carefully and answer the question that follows. A. After my sickness, we moved to Lahore. Number 9. Read the following extract carefully and answer the question that follows. आप लोगों को नीचे दिए हुए पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ना है. Then you have to answer the question that follows. A. After my sickness, we moved to Lahore, a few miles away, but the number of relatives who came to sympathize made my father ask for another transfer. This time to Karnal, where we had neither friends nor relatives. There we got a cottage on the canal bank, built in very peaceful and quiet surrounding. Number 1. To which city the speaker's father was transferred? कौन सा जगह पे वो ट्रांसफर हो रहा था? Answer. Speaker father was transferred to the place called Karnal. 2. Who came to sympathize with his parents? कौन आया था sympathize करने के लिए? Relatives came to sympathize with his parent. Relatives आया था उसके पेरेंट्स को sympathize करने के लिए. Number 3. What were the surrounding of their cottage? Answer. The surrounding of the cottage was very peaceful and quiet. Number 4. Pick out the word from the extract which are similar in meaning to the following expression. Be supportive emotionally. Emotionally support करने को क्या कहते हैं? Sympathize करना. The sympathize and to be supportive emotionally का मतलब एक ही है. आपको ये पैसेज करना है और फिर आप ये पैसेज भी कर सकते हैं. Baldio was responsible for signaling whether or not the tunnel was clear of obstruction, and his manual signal stood before the entrance. At night, it was his duty to see that the lamp was burning and that the overlamp mill passed through safely. Shall I come too, father? Asked Tembu sleepingly, still lying in a huddle in a corner of the hut. No, it is cold tonight. Do not get up. Now number 1 question. What was Baldio's profession? उसका profession क्या था? वो क्या काम करता था? Answer. Baldio was a watchman who worked as a watchman near a railway tunnel. वो क्या था? एक watchman था जो watchman काम करता था near a railway tunnel. Number 2. Why did Baldio ask for his son not to come? क्यों उसने उसका बेटे को मत आने के लिए बोला? He refused to take his son with him because the weather was very cold. क्योंकि weather क्या था? बहुत ही ठंड था. Number 3. Why did Baldio do at the tunnel? What did Baldio do at the tunnel? Baldio's duty was to check if the tunnel is obstruction free before the arrival of mail train. He also checked if the signal lamp is burning at the night. उसका क्या था काम? वो टनल में चेक करता था यदि ट्रेन आने से पहले कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा है या नहीं, वो क्लियर करता था. Number 4. Pick out the word from extract which are similar in the meaning of the following expression. A things that prevent passage or progress का मतलब क्या है? जो चीज में पैसेज होता है
वो किस में होता है, मेल में, क्योंकि जब हम लोग मेल टाइप करते हैं वहाँ पे हम लोग पैसेज लिखते हैं या नहीं. सो द सेम मीनिंग इज मेल एंड अ थिंग दैट प्रिवेंट पैसेज.